हाँ। आपको क्लास से फिर से बाहर जाना है क्या? लास्ट टाइम भी आपका ही प्रॉब्लम हुआ था, ये बार भी आपको क्लास के बाहर जाना है क्या? तो फिर आप बिहेव करो ना, आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ बोलो मुझे। सॉरी सर। हमेशा ये प्रॉब्लम है आपका। थोड़ा क्लास में बिहेव करो, ये टाइम पास नहीं है, और आपके लिए होगा तो फिर मत अटेंड करो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। Just give me a minute, okay? The device is not working. Just 1 minute रुक जाओ स्टूडेंट्स। यस सर। Okay. We are on what question? Wages वाला। 7 तो हमने क्या कैलकुलेट किया था? 63/5 था ना, करेक्ट? फॉर यस वन। सर। Yes, sir. नाउ फॉर द सेकेंड। Yes, sir. We had done till where we had So we were adding figured out his new rate 56.7. of Sir, new we were hours. was increase in hourly payment. 1 मिनट रुक जाओ। अभी क्या हो गया, इसके बाद हमने 10% ऐड किया था, तो वो हो जाता है 56.7, विच कम्स आउट टू बी 623.7, करेक्ट? 0.7. एंड Yes, sir. 45 आवर्स है। अभी 40 आवर्स का 10% मतलब 4.5 आवर्स। तो अगर ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा? 40 40.5 अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 6237/405। समझ में आया कैसे? मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर? अभी ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है, ऐसा नो? टोटल देखो, इसका 18 है, इसका 9 Yes, है, sir. 9 से Yes. डिविजिबल है। तो डिवाइड करके क्या मिलेगा? 9 × 6 इज 54। ओके, 6 and 2 8, 83 में इट विल गो 9 टाइम्स, 27 में 3 टाइम्स। 405 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 टाइम्स 36, 45 5 टाइम्स। 5. अभी ये दोनों नंबर फिर से 9 से डिविजिबल है। Yes, sir. 9 × 7 इज 63, 63 में 77 टाइम्स, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। 5. नाउ इट, अभी दोनों को अभी डिफरेंस कितना है? 14/5। इसका ये डिफरेंस और ये डिफरेंस कितना है? 14/5. 14/5। 14 divided by 5 is equal to 2.8. So how much is the change in money per hour? Hourly rate 2.8. increased by 2.8. Understood? Yes, sir. It was a easy question, just the number are big, so calculation को time जाता है। Hello. Is it clear? Sir, after 77/5, how did we get 14.5 equal to 2.8? हमने 7 देखो, अभी इफ वी वांट टू फाइंड आउट आर्ली रेट तो हमें डेसिमल में फाइंड आउट करना पड़ेगा, करेक्ट? बट इंस्टेड ऑफ दैट वी Yes, हैव sir. बोथ द फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 5। हम क्या करेंगे, इसको Yes. डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, लेट से, देन विल कन्वर्ट 63/5 इन डेसिमल,
and then we will subtract these two numbers, correct? So basically we are Yeah, subtracting these two fractions. So 77 by 5 minus 63 by 5 कितना होता है? it's 14/5. Understood? And to decimal. Okay, sir. Divyan, what is your doubt? दिव्यान क्वेश्चन में डाउट है, क्या डाउट है? आप चैट में लिख लो, मैं पढ़ लेता हूँ. चैट में लिखो तुरंत, आई विल रीड इट आउट. Hello, sir. Can you hear me? हु इज दिस? Sir, I'm Devyan only. हाँ बोलो. Sir, actually, I have a doubt that how did you get, like, when you cut it? So how did you get 63.5 per hour? फ्रैक्शन रिड्यूस किया है ना. इट इज 567 फॉर 45 hours. Yes. For 1 hour it is how much? So 567 divided by 45. Yes. तो आप इसको देखो, 7 + 5 12 18, ये 9 से डिविजिबल है. 9 into 6 54. 27 remains, so 3 times, and 9 into 5. Okay. Arnav, what is your doubt? So Sir, how did you remove the decimal like 40.5? जी, अगर आपको ये नहीं, आपको अगर नहीं आता ये, तो it's very disappointing thing. It is very easy, students. You should have learned this in 5th standard only. Okay, it is upon 40.5. Now if I multiply this by 10 by 10, so 10 by 10 क्या हो गया? 1 हो गया. Yes or no? Yes. So if you multiply Yes. anything by 1, it remains the same. So numerator into 10 क्या हो जाएगा? 6237, and यहाँ 405. Okay. Divyan, what is your doubt? so why did you subtract 77.5 from 63.5? I have already explained this. I'm not going to again waste my time explaining the same thing. Either you pay attention or you go through the recording. And it is very basic thing. So उसके लिए आप हर चीज एक एक दो दो बार नहीं पूछ सकते, और जब दूसरे डाउट पूछ रहे तब ध्यान दिया करो क्लास में. मैंने ये सेम चीज एक्सप्लेन किया था, हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किया है. If you are not Okay, paying sir. attention, it's your fault. Okay. Question number 8. The pages of a book are numbered starting with 1. Okay. So it goes like, it is in serially consecutive numbers 1, 2, 3, and so on. So you add some page numbers and then you find out that the total is 130. But you know that you have added one page 2 times. So you need to find out which page was it. Now we know sum of consecutive numbers का formula क्या है? N multiplied by n plus 1 divided by 2. Yes or no? This is the sum of consecutive numbers starting from 1. Everyone knows this formula? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, isn't it n minus 1? No, it is n into n plus 1. So what is this formula for? Sum of consecutive numbers or terms starting from 1. Okay. I'll just make a note. Sir, so sum of consecutive natural numbers? हाँ, natural numbers, correct. Starting from 1, basically natural numbers ही है ना. तो अभी देखो, हमें पता है कि कोई तो एक पेज हमने 2 बार ऐड किया है, करेक्ट? ओके. So now, without making an equation, I'll explain you this sum. अभी हमें पता है 1 + 2, if we keep on adding this way, okay, till 15. What is the total? Let's say 15 हमने count किया, so 15 into 16 divided by 2 कितना होता है? Using this formula 120. 120. So अगर पहले 15 पेजेस का सम 120 है, but when you are adding you get 130, मतलब कौन सा पेज आपने एक्स्ट्रा टाइम ऐड किया है? 10. Understood? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ. Sir, I didn't understand why do we have to stop at 15 and then multiply it with 16?
अरे मैंने वही बोला ना कि अभी हमें क्या करना है, 130 तक के नंबर्स का टोटल चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स का। तो अभी हमें पता है कि पहले अगर 10 नंबर, आप ये ट्रायल एंड एरर मेथड जैसा है, बट इट विल वर्क फॉर यू ऑल इन द एग्जाम। ओके, तो हमें पता है पहले 15 नंबर्स का टोटल क्या है, 1 to 15 का। तो 15 into 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 120। 1. तो विच इज क्लोजेस्ट टू 130? yes or no? Yes. So Yes. that's the reason I stopped at 15. आप कोई भी नंबर लेके ट्राई करो, अगर आपको लेट से चाहिए कि हम 12 पे ट्राई करें, ओके 12, सो फर्स्ट 12 पेजेस, 12 into 13 डिवाइडेड बाई 2, 78। 78 is very far from 130, so you move ahead. Is this clear? Okay, sir. Yeah, now I And I understood, know sir. now someone will ask, if the number is very big, what to do? Let's say नंबर दिया है 250 और समथिंग, उसके क्लोजेस्ट सम फाइंड करो ना। फॉर्मूला तो बहुत इजी है, आप पहले 30 सम्स का टोटल ले लो, 30 into 31 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 450 हो जाएगा। नहीं, 15 into 465, यस, विच इज वेरी फार फ्रॉम 250, तो ये नहीं होगा। 20 ट्राई करो, 20 into 21 अपॉन 2। 200. हाँ, तो वैसे आप कर सकते हो। स्टूडेंट जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। ये स्टूडेंट, इज द सम क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So see, where you can use trial and error method, use that method, okay? Sir, Now this see, is very easy. there are two roots, okay? So what you do, first you square on both the sides. स्क्वायर ऑन बोथ द साइड मतलब इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड पे आपने इक्वल टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, ये स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 प्लस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। सो वी गेट रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अभी रूट ऑफ व्हाट नंबर इज इक्वल टू 5? 20. अंडरस्टूड? Yes, sir. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 10 एंड 11 आप होमवर्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज सिमिलर टू लास्ट पेपर्स क्वेश्चन नंबर 11, एकदम सेम है, सिर्फ फिगर्स चेंज हुआ है। हेक्सागोन एंड पेंटागोन है, वहां पर हेक्सागोन एंड ऑक्टागोन था, ओके? तो इट इज वेरी सिमिलर सम। कैन we'll start with question number 12, okay? Now in the question, it is, the diagram is not clear. In diagram it is 1025, and in the question it is written 1005. So first let's check with 1005, okay students?
Students, is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So 3 such rectangles are given. Okay. Click. Hitansh, please be on mute. શું થયું? અંદર સુધી આવાજ આવે છે. Students, please be on mute. I'll remove you from the class directly if I get to know who is this. And then don't attend the class only today. सीधा next class attend करना फिर. 3 identical rectangles are overlapping as shown in the figure. The length and breadth of each rectangle is given. The area of each shaded square portion is 625. मतलब ये एक square है, इसका area is 625. So what is the side? 25. 25. 25. So this is 20. Yashodan, what is your doubt? सर पर उधर कहाँ का मतलब ये स्क्वायर ऐसा कहाँ का है? Question पढ़ो ना. ओ सॉरी सर. The area of each of the shaded square portion. अभी देखो, अभी हमें क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. करेक्ट. ये साइड है 200, ये है 1005. ये साइड कितना कम हो गया है? So 25 by 200 980. minus 25. सर 980. So 980. Okay. So this side is 980. And how much is this side reduced? 175. Also, the downside side is 980 and the vertical ये side is कितना है? ये 170. साइड कितना है? Yes, sir. Sir, 980. अरे मैं ये साइड की बात कर रहा हूँ. हाँ, ये 980 है क्या? Yes, इससे sir. पहले sir. किसने बोला ये 980 है? ये वाला हाँ, ये वर्टिकल साइड कितना हो गया? So 175. 175. अभी ये साइड फिर से कितना हो गया? 980. Yes, sir. This side is 175. Yes. What is अग्रवाल, क्या डाउट है बोलो? सर क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि हॉरिजॉन्टल साइड 1025 है 1005 नहीं. In the diagram it is 1025 and in the text part it is 1005. So first Sir, but I have listen to me. First इसलिए मैंने बोला कि हम 1005 से कंसिडर करते हैं. आपके पास आंसर है क्या? calculated with the 1025. The answer is in the option, but I have calculated with 1005 also, but it is not in there. Not there. So should we start with 1025 only, students, or what should we do? Tell me. Yes, sir. So we should start from 1025. 1025. Sir, I think we should actually do the 1005 first, as we've done so much so far. Because if 125 turned out to be wrong, then all our So now as things- he's saying that he has tried and he got the answer, let's listen to him. So 1025 Okay, sir, में let's से 20 पे हमने subtract किया तो ये हो गया 1000. This is same 175. This is again 1000. This part is 175. This is 1000. सृष्टि बोलो क्या डाउट है? अभी ये पार्ट कितना हो गया? 1000. ये पार्ट कितना हो गया? 175. This is complete 200. And this is complete down is 1000. 1025. Yes, sir. तो देखो 200, 1025. Sir, I 200. calculated, sir. It is coming. The answer is from 1025. अभी हो गया ना. अभी हम साथ में कैलकुलेट कर ले एक बार. Yes, तो sir. 1025 is 2 times, 200 is 2 times. तो मतलब 400 plus 2050. ये हो गया बाकी के साइड्स का. अभी 175 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3 and 4. So 175 into 4 कितना है? 700. 700. ठीक है. And 1000 into 1, 2, 3, 4. So 4000. तो मतलब 4700 ये हो गया.
and this is 2450. So 4700 plus 2450. So which comes out to be 7150. Is 7150 the answer? Yes, sir. Okay, so then 1025 is correct. Is it clear? Yes, sir. Actually, even the worksheet which was shared, it is 1025 itself. What? I could not hear you. I didn't understand. बोलो फिर से. सर जो वर्कशीट शेयर किया था आपने उसमें भी 1025 ही था लेंथ का वैल्यू. अच्छा, ठीक है. There are 5 huts in a line on a farm. Okay. So 1, सही में डाउट है. 3, 4, 5. Okay. The distance between A and B is 2 meters. So this is 2 meters. This is 1.5 meters. Between C and D, it is 8 meters. And between D and E, it is 3.5 meters. Okay. So A, B, C, D, and E. Okay. Finally, hut A is 1 meter from hut E. How far is B and E? मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर. तो आपको समझ में आया ये एक लाइन में नहीं है ऐसे. तो मतलब E वाला E यहाँ से पास है, A से पास है. समझ में आया? तो B to E हमें फाइंड आउट करना है कितना है. तो B to E कितना हो जाएगा? देखो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये. 3 मीटर. वेरी गुड. 3 मीटर. सो दैट मीन्स E इज एट द बिगनिंग, फिर है A, फिर है B. ओके. अभी क्या दिया है? D एंड A, यहाँ B, C एंड D. तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1.5, ये हो गया 3.5. अभी ये ऐड करो, 7 हो गया और ये 8. मतलब D to E 8 है. समझ में आया? यस सर. एंड दिस टोटल इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 8. सो E to B कितना हो गया? 1 + 2, 3. 3 सर. 3 meters. Understood everyone? Excuse me, Yes, sir. 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 जिनको डाउट है, raise your hand and then ask. Yes, Srishti, what is your doubt? Sir, actually, can you go to the 12th question, 12th one? I needed to take a screenshot of it. Okay, I will go afterwards. Alek, what is your doubt? Sir, my doubt over here is that it is saying that the distance between C and D hut is 8 meters and D and E hut is 3.5 meters. But I do not understand by the figure you have shown below that how will the distance between D and E be 3.5? D and E में 3.5 नहीं है ना, C to D 3.5 है ना. No, sir, it is saying C and D is 8 meters and between D and hut E is 3.5 meters. Yes, sir. Yes. Sir, so they can never be in a straight line because then how is it possible for A and E to be 1 meter? Because then that won't be a straight line. अच्छा रुको, मुझे पढ़ने दो एक बार. क्वेश्चन में तो स्ट्रेट लाइन है. ये इसका आंसर की मैंने दिया है ना स्टूडेंट्स. तो आंसर की में इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग आंसर लिखा है क्या? रॉन्ग क्वेश्चन लिखा है क्या? Sir, 3 meter is coming. I guess the correct order is C, sir, B, 3 meters is A, coming. E, D. रुक जाओ. अभी हम क्या करते हैं, फिर से चेक करते हैं. So in the answer key, there is 3 meter is given. हाँ रुक जाओ. C to B. answer ki 3 meter is given. Listen. Sir, Will you I guess please that be quiet? I understood आंसर में 3 मीटर दिया है. I have understood this. इसके अलावा किसी को और कुछ बोलना है? यशोधन, क्या बोलना है आपको? बताओ. सर उन्हें सर्कल में होना चाहिए. अच्छा वो स्ट्रेट लाइन. ठीक है. और किसी को कुछ बोलना है? कनन, Yes, what is your doubt? circle में the houses are in the circle. हाँ ठीक है. ऋषिक गोयल, what is your doubt? So the houses are in a circle. That's Kanan, what I what was is saying. your doubt?
Sir, I don't have a doubt. I'm just because it's written in the question, the 5 hearts are in a line. That is why I'm thinking the order is D, E, A, B, C, because 8 meters is much bigger than the other distances. So maybe they're telling from the starting point to the ending point. हाँ, now let's check this. D to E कितना बोला है उन्होंने? D to E कितना है? 3.5. हाँ, this is 3.5. This is 1. This is 2. This is 1.5. So now if we count from D to C, it is 8. Yeah, more than 8. So, but it still doesn't. Eight, sir, it's correct. Sir, It is more eight. than 8. Sir, it That- would be more than 8 as it is a curved line, not a अरे straight. बाबा, वो मैंने ड्रॉ कर्व लाइन किया है. आप क्या बात कर रहे हो स्टूडेंट्स? कर्व लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया. अभी उस पे से कट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने Yes, sir, it is 8. Sir, D is the starting point and C is the ending point. Yeah, very good, Kanan. So it is in the straight line only, okay? And the answer is 3 meters. Yes, sir. Is it So clear? according to this figure, then only it will be 3 meters. And whatever answer we are getting, correct. Understood? Yes, sir. Yes, sir. और देखो, एक्चुअली वी डोंट नीड दिस ऑर्डर ओनली. ठीक है, फर्स्ट थिंग, ऑर्डर आप कुछ भी लिखो, फाइनल आंसर आपका 3 आएगा. क्यों पता है? So So you you are cut out. inaudible. So you are inaudible. कैन यू हियर मी नाउ क्लियरली? Yes, sir. Now. Yes, sir. See, here order of these huts doesn't matter at all, because they have not asked at what place B is there or what place C is there. The thing here matters is E to B और A to E का distance कितना है. तो A to E 1 किलोमीटर है and A to B 2 किलोमीटर है, करेक्ट? तो हमें बस वो दोनों प्लॉट करके फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस कितना है. Yes, sir. ओके, चलो अभी हम कंप्लीट करेंगे पेपर. 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा तो भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बिकॉज लास्ट 2 क्वेश्चंस ही बचे हैं. वी हैड टू डू A plus B, but instead he did A minus B and we got the answer as 66. Now they have given that this 66 is equal to 1/3 of the correct answer. So let's say this box is the correct answer, which is X. So it is equal to 1/3 of X. So X का वैल्यू कितना हो गया? 198. बराबर 198. अभी इसका मतलब है A plus B is equal to 198 and A minus B is equal to 66. We need to find out the value of Sir, I think you have an network issue. what? Sir, we cannot hear you. See, A plus B is equal to 198. A minus B is equal to 66. We need to find the value of B. तो अभी हम क्या करेंगे? Substitute B. So B is equal to 198 minus A, or you can write B is equal to A plus 66. Correct? Yes or no? Yes, sir. या तो आप क्या कर Yes, सकते हो? You can write A is equal to 66 plus B. Now use this part, okay? So here we'll put A is equal to 66 plus B. So we get B plus B plus 66. Sir, we cannot hear you. Sir, you are paused. Sir, you're gone. I think your internet. Can you hear me now clearly? Students, can you hear me now clearly? Hello? Students, can you hear me now clearly? Yes, sir. Now we can hear you. Okay. Now from here we got these two equations. So we'll from this equation we'll write A is equal to 66 plus B. Okay? Put this value of A in the first equation. So we get B plus B plus 66 is equal to 198. Correct?
So we get that 2b is equal to 132. So when you divide this by 2, what you get? Answer as 66. Sir, it is 66. So b is equal to 66. Kanan, Sir, you have some 66. easy method. Kanan, what is your doubt? Sir, I don't have a doubt. I have an easier method for this. Okay, please tell me. You send it on the WhatsApp group, okay? Because I need to complete the last Okay, sir. and already we have less time. Okay, sir, no problem. Question number 15. The simple interest on a certain sum. So let the principal be x after 6.25 years, okay? 1 by 4 is equal to 6.25 I think you're years. having an internet issue. We cannot hear you. Can you hear me now clearly? Sir, now I can hear Yes, you. sir. So this is number of years, okay? Is 3/8 of the principal. So simple interest is equal to 3 by 8 of x after 6.25 years. Okay. We need to find rate of interest. So write simple interest into 100 upon principal into number of years is equal to rate of interest. Simple interest is how much? 3 by 8 into x into 100 is equal to x into 6 1 by 4 को हम करेंगे convert in, write this as 25 by 4. Okay. Is it clear, everyone? Is it clear, Yes, sir. everyone? Yes, sir. Yes, sir. X Yes, and sir. X cancelled out. So we are left with 3 by 8 into 100 upon 25 by 4. So now I'll write this as 300 by 8 divided by 25 by 4. So can we write this as 4 into 25? 4 by 25. Yes. So Yes, sir. 8 into 4 into 1, 4 into 2. 25 into 2 is 50. 300 divided by 50 is equal to 6%. 6. Is this clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So we'll end our class over here, okay, students? And continue. Sir, हाँ बोलो. Okay, sir. sir, can you go to previous screen? Yes, sir. Thank you, sir. चलो, bye everyone. Bye, sir. Bye, Thank you. Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, sir. Thank you.